Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viewers, there are some disparate sounds between the two languages. Students cannot perceive these sounds because these sounds don't exist in their own language. So this difference of sounds creates problems for the students. Both in understanding and pronouncing these sounds. Today, I would like to discuss some of these sounds which are confusing for Pakistani students. First of all, we have these three sounds, p, t, k. Native speakers pronounce these sounds with a little aspiration. For example, first sound is p. The ear is completely blocked by the lips and then released with a slight explosion. P. P. Closest Urdu sound is P, which is not the same. P. And we mark this aspiration by writing Small h. examples are perhaps, permission. The next sound, that is t. This sound is also aspirated. We place tip of the tongue behind the upper teeth on the alveolar ridge. ये ऊपर वाले दांतों के पीछे एक पट्टी होती है, वहां पे टिप ऑफ टंग लगाते हैं and then it is released with a slight explosion. T. T. Closest उर्दू sound is t. लेकिन फिर वही बात, ये बिल्कुल सेम नहीं है. इसको भी हम स्मॉल एच के साथ इस एस्पायरेशन को हम जाहिर करते हैं, जैसे टीम, टॉप, टमाटो. इन द सेम वे द थर्ड साउंड इज क. Most of Pakistanis are not used to listening these sounds, so they find it difficult to comprehend and utter these sounds. K. This sound is produced when back of the tongue is placed between hard and soft palate. ये alveolar ridge के पीछे एक हमारे हार्ड सी पट्टी है, फिर नरम है, उसके दरमियान बैक ऑफ द टंग जो लगाया जाता है, पर ये भी एक्सप्लोजन के साथ, यानी इसको छोड़ा जाता है, तो साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड दैट इज ख साउंड. और हमारा उर्दू इसके करीब करीब ख साउंड है, लेकिन वो सिमिलर नहीं है. ख जैसे करेक्ट, Cupboard. correct, catch, comb. Keep one thing in mind. When these three sounds are preceded by S, these are not aspirated. ये नहीं है कि हमारी जगह ही इसको एस्पायरेशन करेंगे. अगर इसके पीछे S आ गया, नेटिव स्पीकर्स भी इसमें एस्पायरेशन नहीं करेंगे. जैसे स्पेशल, स्पेशल. आप देख लें पीछे से, आप कोई नेटिव स्पीकर सुनेंगे तो वो उसमें स्पेशल नहीं कहेगा, बल्कि स्पेशल कहेगा. तो ये पहले तीन साउंड्स हैं जो कंफ्यूजिंग साउंड्स थी, जिनको आज मैंने डिस्कस किया है.